हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे नए लाइव स्ट्रीम में, जिसमें हम आज के फाइल में आज के लाइव स्ट्रीम में देखने वाले नए क्वेश्चंस, वो भी जावास्क्रिप्ट के बेसिक और मोस्टली जो है वो इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले सवाल होंगे। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ करता हूँ, सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ एलिमेंट्स की। ओके, सो लेट्स वेट, लेट मी यूज इट हियर एंड मेक इट टू द लाइव चैट एज वेल। लाइव चैट विजिबल, यस, एब्सोल्युटली फाइन। जिसको भी इंटरव्यू देना है गाइस, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आप सब देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे, और लिंक वगैरह डाली हुई है। लेट मी चेक इट वंस, स्ट्रीम एंड ये सब चीज़ें देखने दो। या सो मुझे यहाँ पे एक बार चैट में भी पोस्ट करता हूँ मैं मीट की लिंक, सो दैट आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यस, लेट मी पिन इट एज वेल। यस, गूगल मीट फॉर लाइव इंटरव्यू। यस, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अभी हम शुरू करते हैं फिर अपना लाइव स्ट्रीमिंग, लेट्स डू इट। सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम जो देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन 1 फॉर टुडे इज या हाउ डू यू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अ नंबर इन जावास्क्रिप्ट। ओके, हाउ डू यू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अ नंबर इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सो सबसे पहले वी हैव मल्टीपल वेज, मतलब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वेज है पर्टिकुलर स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहला वे है, मैं लिखता हूँ ए यहाँ पे। ओके, सो जो मोस्ट कॉमन यूज होता है वो एक हमारे पास फंक्शन जो हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, विच इज नंबर। ठीक है, दूसरा वे जो है हमारे पास फॉर कन्वर्टिंग और पर्टिकुलर स्ट्रिंग इनटू अ नंबर इज पास इन। इससे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक आध स्ट्रिंग को और नंबर के अंदर। आफ्टर द थर्ड वे वी हैव इज दैट पास। और ये जो सभी फंक्शन है, मेथड्स है, ये हमें प्रोवाइड किए जावास्क्रिप्ट की तरफ से। सो इसका हम हमारी कोडिंग में या भी जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक प्रैक्टिकल वे में हम ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो बने रहेगा हमारे साथ। सो अगला जो वे कन्वर्ट करने के लिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा और ये सबसे बेटर है एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, वो है यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, प्लस और जो भी आपकी एडम करना कोई स्ट्रिंग हुई, उसको यहाँ पे वो पर्टिकुलर वेरिएबल जिसमें हमने स्ट्रिंग स्टोर की हुई यहाँ पे वो यूज करना, प्लस एक्स्ट्रा, दैट्स इट। ये हमारे पास 4 वेज है टू कन्वर्ट अ पर्टिकुलर string into a number. So let's see by example. Let me convert it. Okay, so let me create one string first. Let string, हाँ, और एक guys important, अभी यहाँ पे स्ट्रिंग तो वैसे कीवर्ड नहीं है, बट एज हम करना लेते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड है, तो उसको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, या फिर हम उसको एज अ नेम हम यूज नहीं कर सकते। जो भी जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड्स है ना, उनको हम एज अ नेम कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रखना भाई लोग। So let me create, I have created one string. Okay, let me keep it number here. और ये एक और बहुत बात है, आप कोई भी एजम करना, आपने यहाँ पे लिखा कार्ड, ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते नंबर में, इट विल गिव अस एरर। वो भी हम देखेंगे क्या एरर देगा। पहले हम शुरुआत करते हैं बेसिक से। ओके, सो लेट मी ऐड 5। ओके, अगर हम अब इसका टाइप चेक करेंगे, लेट्स चेक इट्स टाइप। ठीक है, टाइप ऑफ string. Okay, type of string, and let's run this program here. Okay, so here you can see the type of string is string. Okay, now what we are going to do, we are going to convert it into a number. Now let me create one another variable number, and here we are going to use number of string, right? And now let's check console.log type of number here, type of number, and let's see what it gives us. Let's run our project. As you can see here, by using the number function, it's a global function, we can successfully able to convert this string 5 into a number 5, right? So that's why it is mostly used. Okay, keep this thing in always mind.
Now let's use pass int and let's see what it gives us. Yeah, here also it gives us a number by using pass int. Now next is pass float. Run the program, again it gives us number, so all of them are working absolutely fine. Now the last one, and which is mostly used on the industrial standards. Okay, let's see what it gives us. देखते हैं हमें क्या देगा. Yes, it is also give us number. Why? Because it's the unary operator, and unary operator converts string into number. So yeah. Now मैं आपको लाइक सिनेरियोस बताता हूँ, ये कहाँ पे मोस्टली यूज होगा. लाइक एज्यूम करना आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लाइक उसमें क्या है ना, जो डेटा आ रहा है वो जेसन में नहीं आ रहा, वो आ रहा है फॉर्म डेटा में. सो फॉर्म डेटा पे मोस्टली क्या होता है ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी चेक व्हाट्स द इशू हियर. या stay in that call brother, I am not leaving. Yeah, so basically क्या होता है ना, जैसे क्या assume करना कोई भी नंबर है. Okay, my bad. Yeah, let's start with fresh. Okay, so the basic example is, suppose आपके पास एक फॉर्म है फ्रंट एंड में साइन अप का, उसमें 3 फील्ड्स है. एक तो अपलोड पिक्चर, लाइक प्रोफाइल पिक्चर, नेम एंड ईमेल. ओके, सो अब क्या कर रहे हैं, लाइक जब भी एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको इमेज भेजनी होती है बैक एंड में, लाइक फ्रंट एंड से बैक एंड में भेजनी होती है पेलोड में, तो हर बार आपको फॉर्म डेटा यूज करना रहता है, नॉट अ जेसन, फॉर्म डेटा. ठीक है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड. तो क्या होता है, जब फॉर्म डेटा हम यूज करते हैं ना, उसमें आपको नंबर भी भेजना हो फॉर्म डेटा के अंदर, वो बैक एंड में हमेशा हमें स्ट्रिंग में ही मिलेगा. ए जो अगर आपने फ्रंट एंड से नंबर में भी भेजा, फिर भी वो बैक एंड में हमें स्ट्रिंग में ही मिलेगा. एज हो सकता है या फिर कोई नंबर हो सकता है, कोई भी कोड हो जाता है. बस ये याद रखना, जब भी हम फॉर्म डेटा में डेटा भेजेंगे तो हमेशा वो अगर नंबर भी होगा तो बैक एंड में हमें स्ट्रिंग में ही मिलेगा. तो उस वक्त क्या होता है, ये जो प्लस ऑपरेटर है, यूनियन ऑपरेटर, हालांकि आप यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन, जैसे कि नंबर है, पास इंट है, पास फ्लोट है, but mostly on industry standard we use unary operator, this plus one. So उस वक्त काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है to convert the string into number. So yeah, that's it with our first question, which is how do you convert string into number, in Java. Now let's move toward the next question. Okay, now what is a template literals? Okay, this is the part of ECMAScript. मुझे लगता है हम पहले ECMAScript के बारे में थोड़ा नॉलेज देते हैं. Yeah, let's search about ECMAScript. What is ECMAScript basically? Yeah, what is ECMAScript? Yeah, give me a second, guys. Okay, so basically ना ECMAScript like it is also the latest version जो ECMAScript का वो है 6. बेसिकली वो रिलीज हुआ था 2015 में. ठीक है ना, और ये हमें क्या करता है, ये रूल प्रोवाइड्स करता है, रूल और सिंटेक्स फॉर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मोस्टली फॉर जावास्क्रिप्ट. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. व्हाट इज ECMAScript? ECMAScript is basically a language or specification standard, and it provides us the core rules and syntax for the scripting languages such as JavaScript. Okay, it is used for other scripting language as well, but mostly for the JavaScript. Okay, let me write down it here. Okay, it is a language specification. It's a language specification standard. It provides the core rules and syntax for scripting languages such as JavaScript और एक HTML. HTML भी scripting language है guys. Okay. और जो लेटेस्ट वर्जन है जावा ECMAScript का,
15. Keep this thing in your mind guys, the latest version of ECMAScript is 15. हाँ ये सवाल जो है वो इंटरव्यूज में आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू, जस्ट आपका बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए, नॉट मोर देन दैट। और इसमें जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा नए लाइक फीचर्स इंट्रोड्यूस है। सो लेट्स look about the features. I am just telling you the feature, not going into a deep inside it. We will look it afterwards. Yeah. So let's start. So the first feature it provides us is the new keywords. We learn about it yesterday. हमने कल के जो लाइव स्ट्रीम हुई थी हमारी पहली वाली उसमें हमने देखा था, कल वाले लाइक सेकंड लाइव स्ट्रीम में भी हमने देखा था जो नए कीवर्ड्स इसमें इंट्रोड्यूस हुए थे। लेट एंड const. These are new keywords introduced inside like ECMAScript. After that arrow functions as well. Arrow functions भी इसमें introduce हुए। After that template literals, ठीक है ना, template literals भी इसमें यूज हुआ है। After that इसमें यूज हुआ है destructuring. Yes, it is important one. Destructuring, yeah. The next thing which is used here is that spread and rest operators. Okay, so let me, it's spelling mistake. And then after that promises and new data structures such as map and set. Okay, so these are the new things, और भी है but these are the important ones and the most like useful ones, I can say that. Okay, so basically what is the ECMAScript? ECMAScript is the language specification standard. It provides, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुए, इसको नेट चेक करने दो पहले। या नाउ व्हाट इज द ECMAScript? बेसिकली ECMAScript है इट इज अ लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड। वो हमें क्या करते हैं, वो हमें रूल्स प्रोवाइड करते हैं और स्पेसिफिक सिंटैक्स प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए, सच एज जावास्क्रिप्ट और XML। और जो लेटेस्ट वर्जन है ECMAScript का वो ECMAScript 15। सो ECMAScript में जो फीचर्स नए इंट्रोड्यूस हुए, लेट मी डाउन, सो जो न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए ECMAScript में वो है फर्स्ट है लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल्स। यस्टरडे हमने इसके बारे में अच्छी खास से पढ़ा है, जिसको भी इसका नॉलेज चाहिए या फिर नॉलेज इंप्रूव करना है तो कल के हमारे लाइव स्ट्रीम जाके देख सकते हैं, काफ़ी डीप में हमने बताया हुआ है लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल्स के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एरो फंक्शंस। तो एरो फंक्शंस एज वेल एज टेम्पलेट लिटरल्स, डिस्ट्रक्चरिंग, spread and rest operators, promises are new data structures such as map and set। इसके बारे में जो नॉलेज है हम और लेंगे डीप में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन। ओके, व्हाट इज अ एरो फंक्शन? डेटा एंड काउंट के बारे में हमने कल पढ़ा था। नाउ अभी हम देखने वाले एरो फंक्शंस के बारे में, ठीक है। सो जो नॉर्मल फंक्शन कैसा रहता है? नॉर्मल फंक्शन इज लाइक दैट फंक्शन, लेट मी डू इट ऑन here. Okay, let's create one function, normal function, function add. Okay, a and b, we are taking two arguments or parameters, and just console log addition here a plus b. Okay, this is normal function, and let's see the arrow function in the same way. Const addition is equal to, this is arrow function guys, a b. Okay, and here we are doing the same thing instead of log addition in arrow function. Okay, a plus b, right? A plus b. Okay, so now the main difference here is that yes, give a call to both the functions at 10 and 15. Okay, and we will pass here
20 plus 30. Let's run the program. Let's see what happens. Yes. So addition in the first one give us 25, and the addition in function give us 50. Now what's the main difference here? So the main difference here is that we have not used any keyword, a specific keyword. Yes, but there is a different syntax, and we have stored this inside one variable, which is addition. I hope you're getting it. And it is also known as the function expression. Keep this thing in your mind, guys. Okay, this is also known as the function expression. Means this is normal function. This is function expression. Function expression matlab simple. The function which we are storing inside a variable, that is function expression. That's it, nothing more than that. Okay. This is the main difference here. After that, so the like this function we can use it as a constructor, but this one we can use function as a constructor, right? After that, another one more important thing, that is the hosting. हालांकि हमने अभी तक होस्टिंग के बारे में देखा नहीं, इसमें इसके बारे में अभी फ्यूचर में चर्चा is hosted variable. It's a function expression. This is not hosted. What? Okay. Hosting, it means that I will tell you. It is a mechanism where variable and function declared are moved to the top of their container scope during the compile phase. Okay. Now suppose if I call this and before declaring this, okay. Let me commit this. Okay. Let's see what happens. Here it gives us proper addition, which is 25. Okay, right? Now let me comment down this thing. Okay, and let me uncomment this and use this here before this addition. Okay, let's see what it does. Now here is the main part. Here it is giving us reference error, and what is that? Cannot access addition before. आपको अगर याद होगा तो कल की लाइफ में हमने सेम एरर दिखा था फॉर लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल. तो यहाँ पे आप सर्च कॉन्स्ट वेरिएबल एज आई मेंशन अर्लियर, इसको हम फंक्शन, ये जो फंक्शन एक्सप्रेशन है दैट इज द एरो फंक्शन, इसको हमने क्रिएट किया है कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके. मींस दिस इज द वेरिएबल और ऑल्सो इसको एरो फंक्शन में हम कहेंगे. सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे होस्टिंग के दौरान हमने इसको ठीक है, इस फंक्शन एक्सप्रेशन को हमने बाद में डिक्लेयर किया है और हमको हम इसको ट्राई कर रहे यूज करने का बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, इसके ऊपर, राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स गिविंग अस अ रेफरेंस दैट कैन नॉट एडिशन बिफोर इनिशियलाइज. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन योर माइंड, राइट? So that's it with the arrow and normal function. Okay. Let me down here one normal function for your reference. That's it. Now the third thing is, what is the template literals? This one is important thing. The template literals, it is a feature in the JavaScript which is introduced inside ECMAScript 15, that it allows for easier string interpolation and multi-line strings. They are enclosed by brackets, like tick brackets, instead of single or double quotes, and also we can able to embed expressions inside our template literals using the dollar expression syntax. I will show you basically before. Now let me create a normal string. Okay, let normal. Just give me a second, let me check if everything is going fine. HTML and all of this thing, yeah, everything is perfect, right? Okay. Let normal string here, we will store here inside it. What we can store? Yeah, name. Let me store my name, Mastermind. There. Okay. Now what is the template letter? ठीक है.
हम आप देखते हैं टेम्पलेट। ओके, सबसे पहला सिंटेक्स जो है टेम्पलेट में वो है टिक। We are not going to use normal double quotes or single quotes here. We are going to use a backticks. Keep this thing in the mind. The mastermind there. Okay, this is basically the template literal or template string, but इसको like हम कहते हैं template literals in JavaScript words. Okay, so what happens now? Suppose we have to write multi-line thing. What we can do here? We can able to do this here as well. Like we can able to write down multiple things here. Okay, means multi-line string here. The main use here, like on industry standard, अभी मुझे like 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिंग मैंने सीखी है, नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, 2 स्ट्रिंग ज्वाइन करनी है। लेट मी शो यू, या दिस इज नॉर्मल स्ट्रिंग। ओके, लेट मी टेक वन मोर नॉर्मल टू। ओके, और यहाँ पे मैं डालूंगा ये, ठीक है। अभी क्या करना है, मैं दोनों को ज्वाइन करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, कंसोल डॉट लॉग नॉर्मल स्ट्रिंग प्लस स्पेस प्लस normal string too, right? Or let me run it. Let's see what happens. What it gives us, the mastermind there. Basically, what this plus do, it joins or concatenate both the like strings, basically the first one and the second one. Okay, so now what happens with template string is that, let me show you, console.log, we will use template string here. Okay, now here we have to use variable. Okay, this is variable. So what we will do here is that we have to use dollar sign for using the expression here. Okay, so normal string and another variable normal string 2. I यहाँ पे थोड़ी spelling mistake हुई है, but that's acceptable. Okay, yeah. So here now you can see the mastermind there. The benefit of this is that we don't need to use any plus operator here, right? That's the important one. और जो इंडस्ट्री लेवल के जो भी प्रोजेक्ट्स है, उसमें हर जगह हम टेम्पलेट्स को यूज करते हैं। सो कभी भी आप एज्यूम करना कोई प्रोजेक्ट बना रहे आपके खुद के लिए या फिर अपने पोर्टफोलियो के लिए, सो याद करना और ट्राई करना कि आप टेम्पलेट्स का यूज करो हर जगह पे। और यहाँ पे बेनिफिट ये है कि हम यहाँ पे एडिशन भी कर सकते हैं, टेम्पलेट यहाँ पे एक्सप्रेशन रहता है ना बेसिकली, राइट। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पे हम कोई भी एक्सप्रेशन डाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो या, so that's why we use template literals here. Keep this thing in your mind always, guys. Okay, it is important one, right? Let me, so yeah, basically sit here with the template literals. Now let me tell you what it is actually. Okay, it is a feature in JavaScript which is introducing script 15. Okay, it allows us for easier interpolation and multi-line strings. Okay, now what is the interpolation? As we seen before here, this is an interpolation joining the two string. This is what we call interpolation, right? Multi-line string. Also, the template literals are enclosed by backticks, means this one. Okay, keep this thing in your mind. Let me add it in a bracket because double string is quite confusing. Backticks. Okay, instead of single or double quotes. And what's the main use of template literals? The main use of template literal is we can embed expressions within this template literals. Here is letter spelling mistake. Template literals using
expression syntax, right? Let me give you one example here. Let string is equal to basics. Hi, I am Mastermind and I am. Now what is this? Age is basically expression we are using here, or variable we can say. Okay, keep this in your mind and do not get confused here. Yeah. So that's it with the temporal segment. I hope I'm clear here, right? Now let's move towards the destructuring. Okay. Okay. So I will tell you definition first here. So basically, this is a JavaScript expression which is introduced inside ECMAScript 6. ओके एंड इसका जो मेन इस्तेमाल होता है वो होता है टू अनपैक वैल्यूज फ्रॉम एरेज और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, राइट, और प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट इनटू अ डिस्टेंट और लोकल वेरिएबल्स. लेट मी शो यू दिस थिंग. लेट्स लुक इनटू इट. फर्स्ट हम देखेंगे एरे डिस्ट्रक्चरिंग. ओके, let me create one variable here. Apple, mango, pineapple. Okay, that's it. Let add me one more. So that's popular section. Orange. Okay. Now what we will do now? Let me show you. ये होगा नॉर्मल एरे. अब हम यूज करेंगे डिस्ट्रक्चरिंग. तो बेसिकली डिस्ट्रक्चर में क्या होता है ना, जैसे कि अभी अंदर वैल्यू हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट हम यूज करेंगे डिफरेंट नेम. ठीक है, फ्रूट 1, ओके, फ्रूट 2, फ्रूट 3 एंड फ्रूट 4, और हम इसको इक्वल करेंगे फ्रूट से. अब यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर रहेगी. ठीक है, हमेशा याद रखना एरेज में जो होता है वो ऑर्डर रहता है, ऑर्डर वाइज डिस्ट्रक्चरिंग रहता है. अभी ये जो फ्रूट है वो किसको मैप करेगा, एप्पल को. फ्रूट 2 जो है वो मैंगो को. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है. फ्रूट 3 जो है वो पाइनएप्पल को, और लास्ट वाले ऑरेंज को. अगर मैंने फ्रूट 4 को यहाँ पे रखा और फ्रूट 3 को यहाँ पे रखा, तो फ्रूट 4 मैप करेंगे पाइनएप्पल को, और फ्रूट 3 मैप करेगा ऑरेंज को. अब हम कंसोल करते हैं. ठीक है, console.log fruit 1, fruit 2, fruit 3, fruit 4. ठीक, यहाँ पे आप सब देखना आसानी से आप समझ में आ रहा है. फ्रूट 1 जो है एप्पल को मैप किया, फ्रूट 2 मैप किया मैंगो को, फ्रूट 3 मैप किया पाइनएप्पल को, और फ्रूट 4 मैप किया ऑरेंज को. सो दिस इज व्हाट डिस्ट्रक्चरिंग इज. मतलब हम स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं कोई भी एरे के अंदर की जो वैल्यू है उसको अनपैक कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली स्पेसिफिक वैल्यू को हम अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं. कहाँ पे भी अगर हमें किसी के अंदर स्टोर करना हो, क्या तुम करना, अभी मुझे मैंगो को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है. ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, लाइक अगर मैं डिस्ट्रक्चर नहीं करता तो मुझे क्या करना रहता, मैप करना पड़ता है, या फिर डायरेक्टली फ्रूट ऑफ 2 उसके इंडेक्स को लाइक इंडेक्स यूज करके उसको मैप करके किसी वेरिएबल में स्टोर करना रहता, राइट. बट अभी क्या होगा ना, हमने उसको डिस्ट्रक्चर किया है, मतलब वो पर्टिकुलर एरे को हमने अनपैक किया हुआ है. सो लेट्स शो मी टू यू. लेट्स क्रिएट वन वेरिएबल लेट मैंगो. ठीक है, और मैं यहाँ पे मैंगो कितना अपना फ्रूट, दैट्स इट. मैंगो फ्रूट. ओके, दैट्स इट गाइस. मैंगो फ्रूट मैंगो, राइट. इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है डिस्ट्रक्चरिंग. ओके, so this is what array destructuring is. Okay, now let's move toward the object destructuring. Same with the object, right? Nothing different. Let me create one object here first. Let me download the name object destructuring. Okay,
ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है बेसिकली, ठीक है। लेट मी क्रिएट वन ऑब्जेक्ट हियर, कॉन्स्ट पर्सन, ओके, नेम the mastermind name, age 26, and let me add one more, hobbies, let me add array here, okay, playing games, listening music, and coding, okay. So we have created one object here, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब हम इसको करने वाले डिस्ट्रक्चर। सो जैसे हमने एरे में किया था, एरे में हमने क्या किया था, डायरेक्टली मैप किया था, ठीक है। डायरेक्टली हमने फ्रूट को मैप किया था, लाइक फ्रूट वन को एप्पल के, लाइक ऑर्डर वाइज मैपिंग थी बेसिकली। बस ऑब्जेक्ट में क्या है ना, हम डायरेक्टली यूज करेंगे कीज को, ठीक है, की वैल्यू पेयर को। ये हो गई इसकी की, ये हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। लेट्स रिस्ट्रक्चर दिस, const name, age, hobbies, let me different it, just hobbies equal to person, that's it, and we are done with the destructuring of array as well as object। नॉर्मली क्या रहता है, जूम करना हमने डिस्ट्रक्चरिंग नहीं किया रहता, तो जो अपना कोड है वो इतना क्लीन नहीं दिखता, हमें हर जगह कैसे यूज करना पड़ता, लाइक पर्सन डॉट नेम, इस तरीके से यूज करना पड़ता, हमें हर बार ऑब्जेक्ट का नेम यूज करना पड़ता। बट अभी क्या हुआ, हमारा काम कितना हल्का हुआ, सीधा नेम यूज करेंगे, एज और हॉबीज, दैट्स इट गाइस, एंड वी आर डन विद इट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेम भी प्रिंट हुआ, एज भी प्रिंट हुआ और हॉबीज भी प्रिंट हुए, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अभी मुझे क्या पे डाउट आया, अब हम देखते हैं हम क्या करते हैं ना, हॉबीज को डिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं एरे के थ्रू, ठीक है। कॉन्स्ट hobby 1, yes, hobby 1, hobby 2, hobby 3 equal to hobby, and now console hobby 1, let's see what it was now, perfect, परफेक्ट गाइस। देखा आपने, हमने किस तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से क्लीन दिख रहा अपना कोड। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, सबसे पहले हमने किया पर्सन को डिस्ट्रक्चर, राइट। तो पर्सन को हमने क्या किया, डिस्ट्रक्चर किया, और किस में डिस्ट्रक्चर किया, नेम एज हॉबीज में। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डिस्ट्रक्चर किया हॉबीज को, और अब हॉबीज किसके अंदर था, पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं हमारा जो कोड है इतना क्लीन दिख रहा है, जबरदस्त, मजा आ गया, राइट। आई होप आप सभी को मजा आ रहा है। बाद में देख रहे, फिलहाल तो मेरे पास कोई व्यूअर्स नहीं है, आई नो दैट, राइट। आफ्टर दैट restructuring, now let's write down the definition of it, okay। This is into used inside Javascript 6, it is mainly used to unpack values from arrays or properties from objects into distinct or local variables, that's it guys। I don't think so मुझे एग्जांपल की आपने नीड है, मैं आप ऑलरेडी आपको दिखाया, हाँ, बट लेट्स गिव मी एग्जांपल, लाइक जस्ट आई विल गिव यू सिंटैक्स। That's it. Now let's move towards next thing, which is spread and rest operators. But before doing it, let me drink some water and check some what is going on.
करंटली तो कोई न्यूज़ नहीं है हमारे पास, राइट। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर्स, लेट्स डू इट। सो सबसे पहले हम देखेंगे कौन स्प्रेड के बारे में। स्प्रेड ऑपरेटर, व्हाट इज स्प्रेड ऑपरेटर? बेसिकली इट इज expands its table into individual element। ठीक है, और सिंटैक्स जो है गाइस, हम थ्री डॉट्स यूज करते हैं, और जो भी लाइक पर्टिकुलर हमें लाइक एक्सपांड करना हो, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं। जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे एक्सपांड करना है, जम करना ए बी सी, ठीक है। दिस इज व्हाट सिंटैक्स इज। लेट मी शो यू। लेट्स क्रिएट वन वेरिएबल, लेट name is equal to the mastermind name। लेट मी राइट डाउन ओनली mastermind, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंसोल करेंगे स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करके। व्हाट इज इट से, लेट मी यूज हियर। नहीं, हम जावास्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहे हैं क्या, राइट। व्हाट द डिफिनेशन मास्टर स्टेप टेक करेंगे। लेट्स सी व्हाट it will use। Yeah, now this is what we use name like split operator for। now what happened here, as you can see all of them are different ones, मतलब before we have string here, now all of them are individual। m is different, a is different character, s is different character, d is different character, e is different character। what it does basically, it expands iterable values such as array or name like string basically into a single one or an individual value of character, you can say, right? That's why we use spread operator. Keep all these things always in your mind, okay? Now yeah, that's what we use spread operator for. Now let's talk about rest operator, okay? Rest operator, okay. This operator is mainly used to collect multiple elements into one, okay। इसका सिंटैक्स जो है, let me write down here।
अब हम क्या करते हैं ना, एक वेरिएबल लेते हैं इज इक्वल टू ए बी और सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, कंसोल डॉट लॉग देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। इसने क्या किया, तीनों को डिफरेंशिएट किया, मतलब डिफरेंट किया बेसिकली। सो ये कहाँ पे यूज होता है ना मोस्टली, जैसे कि अब याद करना, let me create one function here, right? Let's see what it does. Now we will create arrow function from onwards. यहाँ से आगे हम हर बार arrow function यूज करेंगे क्योंकि इंडस्ट्री लेवल पे arrow function ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, जस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों को देंगे एलिमेंट्स और लेट्स से या एलिमेंट्स। ओके, और console डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जस्ट एक्सप्रेशन इसमें क्या क्या जाएगा, हम क्या करते हैं, एरे भेजते हैं, एरे नहीं, हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रिंग भेजते हैं ए बी और सी। ठीक है, अभी देखते हैं क्या करता है ये बेसिकली। एज यू कैन सी यहाँ पे हमने क्या किया, थ्री डिफरेंट सिंगल वेरिएबल भेजे। ठीक है, बट इसने क्या किया, इसने इनको कलेक्ट किया तीनों को भी और इनको एरे में कन्वर्ट किया। So that's the difference between the rest and spread, the important different one. ये हमेशा बात याद रखना। Spread operator is mainly used to expand iterables into iterables such as, let me write my iterables such as arrays or string into individual element, and the rest operator is mainly used to collect multiple elements into a one. That's how it works, guys. Okay, always keep this thing in your mind. Now the last thing from the Mastermind, which is important one, that is promises. Okay, promises is quite, मतलब ये काफी से सेशन में करना है, for now I keep it simple. It is basically it is a JavaScript object which represents the completion or failure of an asynchronous operation, and its ये प्रॉब्लम जो है वो एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है हमें लाइक कंप्लीशन और लाइक एज्यूम करना कोई टास्क या असिंक्रोनस ऑपरेशन, असिंक्रोनस फंक्शन जिसमें हमने कोई फंक्शन की हुई है, तो ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है उस फंक्शन फेलियर को और हमें राइट, तो इट इज यूज्ड राइट। इसमें टोटल 3 स्टेप्स रहते हैं, लाइक पेंडिंग विथ लेट मी राइट डाउन पेंडिंग स्टेट, उसके बाद रिजेक्टेड मीन्स क्या, अपना ऑपरेशन जो है वो फेल हो चुका है, एंड लास्ट इज फुलफिल मीन्स क्या, ऑपरेशन completed. That's it, that's it with the promises. Now we will like look for its example और जो भी हम brief में देखेंगे, but not now, because now we are at beginner level. इसके बारे में हमने कल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो जिसको भी इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो कल की लाइव स्ट्रीम से उसमें जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो अभी लाइक फिलहाल तो मुझे लग नहीं रहा कोई आएगा, क्योंकि वैसे भी हमारे पास अभी क्या बोलते हैं गेम नहीं है,
और सब्सक्राइबर्स भी नहीं है कि कोई हमारा इंटरव्यू ज्वाइन करे, बट हाँ, जब भी आएंगे देखते क्या होता है, हम होप तो नहीं छोड़ने वाले, राइट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और जिसको भी इंटरव्यू देना है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे गूगल मीट में। ओके, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग अस। अभी देखते हैं क्या होता है।